Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in basic organic chemistry. Today, the second lecture about aromatic compounds. In my previous lecture, I have discussed aromatic compounds, then some history of benzene, its discovery, its aromatic character, and we end on Huckel rule. And today let's start with Huckel rule. So आज हम Huckel rule को जो है वो अप्लाई करेंगे 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, then we extend it to 10 and 14 pi electron system which are aromatic in nature. And in upcoming lectures I will discuss the 4 pi electron system and 8 pi electron system which are anti-aromatic in nature. So let's start with Huckel rule. It is 4n plus 2. This n, it may be 0 or any integral 1, 2, 3, etc. So first we start with 2 pi electron system. अगर आप इस n को जो है वो 0 पुट करते हैं, then we have 2 pi electron system. So we know that the smallest ring possible, it contains 3 atoms. तो अगर आप जो है वो 3 atoms पे ये अप्लाई करें, then we have this positive charge and here we have carbon-carbon double bond, cyclopropynyl cation. The cyclopropynyl cation is aromatic in nature. अगर आप स्मॉलर रिंग्स की बात करें, भले आप साइक्लोप्रोपेन की या आप जो है वो साइक्लोब्यूटेन की, वी नो दैट दीज स्मॉलर रिंग्स दे आर हाईली अनस्टेबल because of ring strain and angle is about 60 degree. So deviation from normal angle, it creates a it creates ring strain which decrease the stability of these smaller rings. So that's why भले यहाँ जो है वो आपके पास हेटेरोसाइक्लिक में ऑक्सीडेन हो या आपके पास, so these smaller rings they are highly unstable, but the stability of this cyclopropynyl cation, it can be explained based upon the aromatic character, because this is aromatic in nature and these pi electrons they delocalized, and here we have positive charge here and then positive charge here. So this delocalization, it increased the stability of this cyclopropynyl cation, and this stability, it can be only justified based upon its aromatic character. So cyclopropynyl cation, they are aromatic in nature. We know that this positive charge, it is electron deficient, और अगर आप यहाँ electron donating groups जो है वो attach करेंगे, then they increase the stability of this positively charged cation or cyclopropynyl cation. For example, if we have this positive charge and here we have this alkyl group C3H7, or we have C3H7, we have C3H7. So presence of these groups, they are electron donating, they increase stability of this cation, cyclopropynyl cation. Or if we have, for example, we have cyclopropynyl cation and here we have tertiary group. So again, presence of these groups, they increase the
stability of this positively charged ion. We know that अगर आपके पास कोई भी कार्बोकेटाइन है, if electron donating groups are present, then these electron donating groups they increase the stability of positively charged ion or cation. और अगर आप जो है वो suppose देखें, we have carbon, this is इट इज़ ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन. अगर आप कंपैरिजन करें इसकी स्टेबिलिटी का इस कार्बोकेटाइन के साथ, विच इज़ यहाँ आप 3 जो है वो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगाते हैं. ओके, सो इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर. वी नो दैट ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, एंड दीज रिंग्स दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. एंड हियर वी हैव this positively charged carbon. So pi electrons of benzene, they can be donated and increase the stability of this positively charged carbon. So when we compare the stability of these two ions, this is more stable as compared to this triphenyl methyl carbocation. And this is because we know that aromatic character of this carbocation, it explains the stability of this carbocation. The most stable carbocation, these are this tricyclopropyl substituted cyclopropenyl cation. ये सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइंस हैं ये उनमें जो है वो फॉल करते हैं. दे आर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन. These pi electrons, they are donated to this positively charged carbon, positive charge delocalized over the ring, but 3 phenyl rings they produce steric hindrance, and because of steric hindrance इनकी जो शेप है जैसे एक प्रोपेलर की शेप है उस तरह ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाती हैं. ठीक है, सो दिस स्टेरिक हिंड्रेंस इट कन्वर्टेड दिस ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपिनाइल ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेलर शेप, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोपेलर शेप इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ा अफेक्ट होती है विच डिक्रीज इट्स स्टेबिलिटी. एनी हाउ this cyclopropenyl cation, they are known the most stable carbocation, and they are stable in the aqueous solution. And stability of these smaller ring carbocations, they can only be justified based upon their aromatic character. So it contains 2 pi electron system and is aromatic in nature. That's why it is stable. Cyclopropenone, अगर आप cyclopropenone की बात करें, for example we have here C double bond O. This cyclopropenone, they are known compounds, and many derivatives of cyclopropenone they are also known. We know that this oxygen it is more electronegative. Here we have partial negative charge, and carbon it is partially positively charged. तो ये जो partial positive charge है आप ये कह सकते हैं कि electrons they come close to oxygen, and this carbon become positively charged, and this positive charge then stabilized by the presence of this delocalization of this pi electron system. So we know that these smaller rings they are unstable, but these cyclopropenone they many derivatives of these cyclopropenone they are known and can be synthesized, and their synthesis are the known derivatives. They can be explained based upon the aromatic character of these cyclopropenyl cation. तो उसी बेस पे आप इनको जो है वो कह सकते हैं ये स्टेबल्स हैं. इसी तरह आपके पास ये साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन और इस तरह के कंपाउंड जो है वो या ये जो आयंस हैं दे कैन बी सिंथेसाइज्ड. सो नेक्स्ट व्हेन यू पुट 1 in place of n, then we have 4 into 1 plus 2 is equal to 6. So 6 pi electron system जैसा कि आप बेंजीन में जो है देखते हैं, दिस इज द मोस्ट एनकाउंटर्ड aromatic system in which 6 pi electrons are present. Then we have फर्ज करें आपके पास बेंजीन. So aromatic character of this benzene we have explained already,
and in my previous lecture I have discussed the orbitals of this benzene, and then delocalization, and then establishment of its structure and aromatic character of this benzene. We have already explained in details. So let's extend this 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. आप जो है वो कुछ और ऐसे सिस्टम जो है वो एक्सप्लोर करें जिनमें ये 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और वो एरोमेटिक है. फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो यहाँ एक ऑक्सीजन ले लें एंड यू हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम. सो ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि यहाँ ट्राइवेलेंट है, 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं. दैट इज पाइरीलियम केटाइन. दिस इज पाइरीलियम केटाइन. अगर आप इसको देखें, इट इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर. सो पाइरीलियम salts दे आर एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज अगर आप इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें टू सम अदर ऑक्सोनियम आयन, then it has some special stability because ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं या आपके पास ईथर्स हैं, अगर ईथर्स के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेके आएँ, then नॉट स्टेबल, ईजिली वो केटाइन नहीं बनेगा. बट दिस पाइरीलियम salts, they are known and they can be synthesized. This can be explained by the aromatic character of this pairilium salts. And pi electrons here, and you can draw different structure. And then original structure. So this delocalization increase the stability of this pyrillium cation. अगर आप इस pyrillium cation के साथ बेंजीन फ्यूज कर लें, then it is known as, ये मैं बाद में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, it is benzopyrrhenium. जस्ट एक क्लास ऑफ कंपाउंड डिस्कस करने के लिए. सो दिस benzopyrrhenium also contain this pyrillium cation, and we have a well known class of compounds in which this cation is known as, अब यहाँ जो है वो 2 पोजीशन पे फिनाइल है, इट इज 2-phenyl benzopyrrhenium. Commonly it is known as flavelium ion या flavelium cation. So this is this flavelium cation. It is present in a natural product जिसे आप जो है वो एंथोसियानिडीन जो है वो कहते हैं, एंथोसियानिडीन्स या आप एंथोसियानस भी जो है वो कह लेते हैं. सो द कलर ऑफ फ्लावर्स, जो आप फूलों के जो है वो कलर्स देखते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस flavelium cation. So it means the stability of this positively charged oxygen, it can be explained by the aromatic character of this flavelium cation. So presence of this oxygen and positive charge, we know that oxygen whenever it is positively charged, it is unstable, and if this pyrillium cation is stable and some sort of stability, अगर इसके पास कुछ stability है, that stability it can be explained by the presence of 6 pi electron system in the ring. Okay, so it is flat, planar, and delocalization occurs, and this aromatic character it increases the stability of this pyrillium cation. इसी तरह अगर आप यहाँ नाइट्रोजन ले लें, then you have pyridine. Pyridine is aromatic in nature. Six pi electron system. Okay. Pyridine का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, then lone pair of this nitrogen, it is perpendicular. This lone pair is perpendicular. When this lone pair is perpendicular, then it never involves in resonance. And when you draw the resonance structure of this
pyridine, then we have negative charge, positive charge. Here we have negative charge, positive charge, then negative charge here and positive charge, and then original structure. So it means molecule is just like benzene, we replace one of the carbon of benzene with nitrogen, and it contains 6 pi electron system because lone pair it never involves in delocalization or in resonance. So as a whole it contains 3 double bonds, means 6 pi electron system, and it is aromatic in nature. It also prefer to undergo substitution reaction instead of addition reaction. Addition reaction भी होंगे लेकिन जो है वो यहाँ preferably substitution reaction जो है होती है, just because these compounds they tend to retain their aromatic character. अपना aromatic character बचाने के लिए ये aromatic compound जो है वो substitution reactions को जो है वो प्रेफर करते हैं. So they contain 6 pi electron system. अभी आप इसको जो है वो कुछ ऐसे हम compounds डिस्कस करते हैं जहाँ 5 member ring हो but they contain 6 pi electron system. मिसाल के तौर पे आपके पास X में भी ऑक्सीजन या sulfur या NH. Okay, so here we have one double bond, one double bond. Here we have one orbital यहाँ, one orbital यहाँ, one orbital, and this is the lone pair of this head to head. So this lone pair, here we have one electron, because here we have 2 double bonds. So this lone pair, it is parallel to the p orbitals of ring carbon atoms. So that's why it involves in resonance, and here we have 2 double bonds, 1 lone pair. As a whole, this system it becomes 6 pi electron system and is aromatic in nature. For example, अगर आप यहाँ नाइट्रोजन ले लें, पाइरोल aromatic in nature. अगर आप ऑक्सीजन ले लें, फ्यूरान एरोमेटिक इन नेचर. अगर आप सल्फर ले लें, थायोफीन एरोमेटिक इन नेचर. या आप ऑक्सीजन यहाँ ले लें, ऑक्साजोल एरोमेटिक इन नेचर. और वी हैव, या अब यहाँ जो है वो थायाजोल aromatic in nature. So all these compounds they are aromatic in nature. अगर आप इनको वैसे देखें, here we have 2 double bonds. ऐसा लग रहा है जैसे ये डाइईन है. Here we have डाइईन. तो अगर ये डाइईन है then it can undergo addition reaction. But these systems, pyrrole or furan or thiophenes, they preferably undergo electrophilic substitution reaction. Lone pair of this heteroatom, it involves in resonance. मैं एक के स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर देता हूँ, बाकी सब के इसी तरह होंगे. Here we have negative charge, here we have positive, and then all the carbon atoms of the ring in case of pyrrole or furan or thiophene, when we draw the resonance structure, they become negatively charged. Nitrogen, so here we have negative charge, positive. Nitrogen, hydrogen, here we have negative double bond, and then original structure. So pyrrole also 6 pi electron system, it is aromatic in nature. This is because of the involvement of lone pair in resonance. So these compounds they undergo electrophilic substitution reaction to retain their aromatic character. Okay, अगर आपके पास pyrrole है या furan है या thiophenes है, all they can give electrophilic substitution reaction. हाँ, अलबत्ता अगर आप इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करें बेंजीन के साथ तो हम ये कहते हैं these compounds they are more reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction. Greater reactivity is because
यहाँ 5 एटम्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 5 एटम्स से डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हम इन सिस्टम्स को कहते हैं दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव सिस्टम. सो बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव सिस्टम दे आर मोर रिएक्टिव than benzene towards electrophilic substitution reaction. Anyhow, the stability of these compounds are the tendency to undergo electrophilic substitution reaction. It can be explained by their aromatic character. Similarly, if you have cyclopentadiene, here we have 5-member ring, 2 hydrogen and 2 double bond. So it is a diene, cyclopentadiene, cyclopentadiene. So normally अगर जो है वो ये CH2 ये हाइड्रोजन जो है अगर इस तरह किसी एल्कीन के साथ अटैच्ड हों, दे आर नॉट एसिडिक. हम इन्हें कहते हैं दे आर नॉट एसिडिक क्योंकि ये दिस कार्बन इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बट दीज हाइड्रोजन्स ऑफ cyclopentadiene they have acidic character because when you use base then it can be converted into this carbanion, and this carbanion is actually conjugate base. And this conjugate base, it has unusual stability, and this stability it can be explained by its aromatic character because this negative charge is delocalized over the ring. उसी तरह जैसे आपने अभी पायरोल या फ्यूरेन में जो है वो डिस्कस किया, here we have double bond, negative charge appear here and then ये इसी तरह जो है वो कंटिन्यू होगी. हाइड्रोजन and negative charge and so on. So it means the unusual acidity of these hydrogen, it can be explained by the stability of their conjugate base because we know that greater is the stability of conjugate base, stronger will be the corresponding acid. तो ये जब negative charge produce होगा, this negative charge, this carbanion, it is aromatic in nature. Because it contains 6 pi electron system and this negative charge is in delocalization with these two double bonds. Okay, so the aromatic character explains the acidic character of these hydrogen. और interestingly अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें, वी नो दैट अगर आपके पास है CH3COOH और अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे मिथाइल की जगह आप CH2 यहाँ कोई भी क्लोरो लगा दें या फ्लोरो लगा दें, then this is more acidic as compared to acetic acid. So chloroacetic acid is more acidic as compared to acetic acid. This is because of the presence of this electron withdrawing Cl. तो अगर आप इस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप लगा दें तो आप जो है वो देखेंगे here we have 1 hydrogen and 1 CF3. Here we have 1 CF3. Here we have 1. तो आप पांचों कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देंगे देन दिस कंपाउंड इट इंक्रीज द, यहाँ जो है वो इसकी जो एसिडिटी है इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. बिकॉज व्हेन यू जनरेट, जब आप इससे हाइड्रोजन जो है रिमूव करेंगे देन यू हैव दिस नेगेटिव चार्ज and this negatively charged is conjugate base, aromatic in nature, and trifluoromethyl group is electron withdrawing group. So when it withdraw electron, it increases the stability of this conjugate base. That's why increasing the acidic character of this hydrogen. And interestingly, this compound, it is more acidic than nitric acid. This organic compound, because of the presence of electron withdrawing groups, is more acidic as compared to nitric acid, and greater acidity of this hydrogen, it can only be explained
by the aromatic character of this cyclopentadiene A9. Okay, so it is aromatic in nature, having 6 pi electron system. Similarly, अगर आप इसे जो है वो देखें, if you have 7-membered ring, ये भी हाइड्रोजन है, जैसे अभी हमने जो है वो इसको डिस्कस किया. सो दे आर एसिडिक बट दे आर नॉट एसिडिक बिकॉज अगर आप ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आपके पास दिस कार्बोनाइन इज प्रोड्यूस. तो एज अ होल अगर ये जो है वो अगर आप काउंट करें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नॉट स्टेबलाइज्ड. दिस इज नॉट एरोमेटिक इन इट, अनस्टेबल. और इसकी बजाय अगर आप यहां नेगेटिव की बजाय पॉजिटिवली चार्ज आयन लें, दिस इज नोन एज ट्रोपिलियम आयन. This tropylium ion is stable and is more stable as compared to this carbanion. And the stability of this tropylium ion, it can only be explained by its aromatic character. This is aromatic in nature. अगर मैं इसे जो है वो इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करूं, हम ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपिलियम आयन. अगर आपके पास हो बेंजीन, बेंजाइल केटाइन, दिस बेंजाइल केटाइन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रोपिलियम आयन. सो बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, ये जहाँ जाएंगे, सो पाई दिस पॉजिटिव चार्ज is delocalized over the ring. So it means if you have 7-membered ring and positive charge, so this cycloheptatrienyl cation, commonly which is known as tropylium ion, is stabilized because it is aromatic in nature, and this negative charge is not stabilized. इसी तरह अगर आप जो है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखें जहाँ for example, if here we have Br, तो प्योरली जो है वो दिस कंपाउंड इट शुड बी कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इट एग्जिस्ट एज अ आयनिक कंपाउंड. ये इस फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस आयन इट इज एरोमेटिक. So unstability of this A9 unstability of this carbanion and stability of this carbocation or this tropylium ion, this can only be justified by the presence of 6 pi electron in the ring, and which is aromatic in nature. So aromaticity in these carbocation increase the stability of these carbocations. इसी तरह जो है वो if you have some compounds like they are known as tropones. These tropones, they are known compounds, they can be prepared, and several derivatives of these tropones, they can be synthesized. Okay, again this is partially positively charged and oxygen is partially negatively charged, but these pi electrons, they come close to this oxygen and it can exist as this type of structure, because this is aromatic in nature, and this positive charge, it can be stabilized by the presence of this delocalization. It then appear here, and when pi electrons appear here, positive charge here, and then positive charge here. तो इस तरह ये delocalization में जो है वो involve होगा. So existence of this tropones
and easy preparation of several derivatives of these tropones. It indicates that aromatic character of these compounds increase their stability. We know that aromaticity is a stabilization phenomena, जैसे हमने जो है वो अपने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड समटाइम्स लोग जो है वो उसको कंफ्यूज करते हैं ओनली विथ अरोमा और स्मेल और फ्रेगनेंस, जो है वो ऐसा नहीं है, बट एरोमेटिसिटी इज प्योरली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स विच पोजेस एरोमेटिक कैरेक्टर्स, दे हैव स्पेशल स्टेबिलिटी। अगर आप जो है वो इसकी जगह आपके पास ये कंपाउंड हो, ठीक है, अब यहां आपके पास ट्रोपोन्स हैं, आपने 5 मेंबर रिंग जो है वो ले ली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज दिस कंपाउंड्स, difficult to isolate, only isolated in argon। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ये जो है वो डाइमराइज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अगर आप जो है वो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास रहेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड वी नो दैट 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट इज़ नॉट एरोमेटिक इन नेचर, ओके। सो अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस जो है वो साइक्लो pentadienone and greater stability of this tropone, it can only be justified by their aromatic character. So this is all about the stability or aromaticity of 2 pi electron system and 6 pi electron system. In my upcoming lecture, I will extend this concept to 10 pi electron system and 14 pi electron system, and also the anti-aromatic system or the instability of cyclobutadiene in 4 pi electron system and 8 pi electron system. It will be discussed in my upcoming lecture. Thank you very much.